Namaste bachcho. Today we are going to see CBSE Class 10 Course B Syllabus of 2023-24. நிறைய பேருக்கு ஹிந்தில கோர்ஸ் பி அப்படின்னு இருக்கிறதே தெரியாம இருக்கும். ஸோ உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க என்ன கோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. கோர்ஸ் பி யோட புக்ஸ் சஞ்சயன் பாக்தோ, ஸ்பர்ஷ் பாக்தோ. ஓகே, உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். சப்ஜெக்ட் கோர்ஸ் பி அண்ட் சப்ஜெக்ட் கோட் 002. And you are going to write the exam, annual board exam for 80 marks and your internal exams will be for 20 marks. Altogether 100 marks. Internal exams unga school side la provide பண்ணுவாங்க according to your assessments, class behaviors, notebook submissions. According to that you will be getting that 20 marks. அது mostly பாத்தீங்கன்னா 18, 19, 20 இந்த மாதிரி இந்த 3 மார்க்ஸ் தான் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க. So you need not bother about that internal assessment mark. You have to be careful about your 80 mark annual board exam. You have to prepare for that only. Time is 3 hours for your exam. You are going to write the exam for 3 hours. कक्षा 10वीं हिंदी ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2023-2024. पाठ्यक्रम syllabus हिंदी ब means हिंदी course B. அதோட syllabus எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ प्रश्न पत्र 2 कंटों कंट अ और कंट भ का होगा. So your question paper will be divided into 2 parts. That is course that is one section A and section B. That is कंट अ कंट ब. कंट अ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे. वस्तुपरक प्रश्न, objective questions, MCQs. Okay, so 45 MCQs will be asked in कंट अ, जिनमें से केवल 40 प्रश्न के ही उत्तर देने होंगे. From that you have to answer only for 40 questions. 45 will be asked, in that you have to give answer for 45. कंट ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे. Here in the section B, descriptive questions, question answers will be you have to write. Okay, so प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे. In the option, appropriate internal options will be given in the question. Okay, in the questions you have to see the options, how many questions have to be written, that you have to check and write. भारांक 80 वार्षिक परीक्षा, 20 आंतरिक परीक्षा. As I told you, 80 marks for annual exam which you are writing, that one, and 20 for internal assessment, internal examination. Okay, so कुल अंक होगा आपका 100 marks. निर्धारित समय 3 घंटे. भारांक 80. परीक्षा भार विभाजन विषय वस्तु खंड अ वस्तुपरक प्रश्न. So as I told you, the first part is वस्तुपरक प्रश्न, that is MCQs. Okay, so the first one, अपठित गद्यांश. The वस्तुपरक प्रश्न question will be for 40 marks and the खंड ब for 40 marks. Okay, so MCQ 40 marks and the descriptive writing is for 40 marks. Okay, and then now the first part of question, अपठित गद्यांश, unseen passage. That is, some paragraph will be given. From that you will be asked some questions. Okay, 5 questions will be asked. That paragraph is unseen paragraph, that is not from your textbook. Okay, that paragraph is not from your textbook, that is why it is called a unseen paragraph. So totally 2 अपठित गद्यांश, 2 unseen passage will be given. Each one contains 5 marks. Okay, so 5 questions, each 1 mark. So first gadyansh, first apatit gadyansh 5 mark, and the second apatit gadyansh for 5 marks. So totally for 10 marks you are going to write 2 apatit gadyansh, 2 unseen passages. Okay, next question comes in this bahuvikalpiya prashna, that is MCQ questions. Okay, so the second one, व्यावहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न. 1 अंक. कितने प्रश्न है? 16 प्रश्न है. So 16 marks for grammar. Grammar for 16 marks, that is MCQs. Okay, कुल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. So you will be getting 21 questions. From that you have to answer for 16 questions. Okay,
options are there. So you can write only 16 questions. So in that, what all the topics will be covered? Here, first topic will be Padband. In that, 5 questions will be asked. 4 questions you have to give answer. Each 1 mark. So 4 marks for Padband. रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 5 questions will be asked. 4 questions you have to answer. Again 4 marks for this also. समास 5 में से 4 प्रश्न 5 will be given. 4 you have to answer. 4 marks for this also. मुहावरे 6 में से 4 6 questions will be asked. You have to answer for 4 marks. Sorry, 4 questions. So this is for 4 marks. So totally 16 marks for grammar. Third question, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2. So still now we have seen only unseen passage and grammar. Now we are entering inside the book ஸ்பர்ஷ் பாக் 2. அதுல இருந்து உங்களுக்கு MCQs questions. Okay, so காவிய கண்ட் in that only poetryல இருந்து உங்களுக்கு questions வரப்போகுது இப்போ. So that is for 7 marks. Totally from ஸ்பர்ஷ் பாக் 2 14 marks. In that காவிய கண்ட் 7 mark, गद्य कंठ 7 mark MCQs alone. Okay, so पठित पद्यांश पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न. That is 5 1 mark multiple choice questions from scene passage. Scene passage they will be given. From that you will be asked 5 questions. You have to answer for that. Okay. स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर एक अंकीय 2 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे. That is for 2 marks. So from the स्पर्श भाग 2 multiple choice questions will be asked. 2 multiple choice questions will be asked basis of the poems in the स्पर्श. Okay, for that 2 marks. गद्य कंठ prose part now. Prose part 7 marks. पठित गद्यांश पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न. पठित गद्यांश, that is scene passage, that is from your textbook. Okay, so from your textbook 1 paragraph will be given. From that 5 multiple choice questions will be asked. स्पर्श भाग 2 से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु एक अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे. So here again from the स्पर्श भाग 2 lesson 2 multiple choice questions will be asked to develop the students' higher thinking. Okay, so how is their thinking ability? To check that 2 multiple choice questions will be given here. For that 2 marks. खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, descriptive questions. So still now we were seeing only खंड A. In that only MCQs will be asked. Now in खंड ब only we are going to see the descriptive questions. How it is asked, for how many marks we are going to see now. Okay. So पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से 12 मार्क के प्रश्न. So 12 marks questions will be asked. Okay, so from textbook स्पर्श. Okay, from textbook स्पर्श we are going to write the answers now. You are going to write the paper. स्पर्श गद्य कंठ, that is from prose part से निर्धारित पाठों के आधार पर 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे. So from prose of स्पर्श 3 questions will be given. From that you have to write only for 2 questions answer. Okay, कितने शब्द होने चाहिए उसका? 60. So लगभग 60, approximately 60 words should be there. For that each question 3 marks, so 6 marks. Okay, स्पर्श काव्य खंड poetry part. In this also 3 questions will be given. 2 questions you have to answer the same way, 60 approximately 60 words. In the same way each question carries 3 marks, so totally 6 marks. पूरक पुस्तक संचयन भाग 2. So the supplementary book संचयन, from that how the questions will be asked. That is for 6 marks. Descriptive questions for 6 marks. पूरक पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना होगा. From that also 3 questions will be asked. 2 questions you have to answer. Each carries 3 marks. So totally for 6 marks. Fifth one, next topic is लेखन, that is creative writing. For that 22 marks. Creative writing, रचनात्मक लेखन. So in that 5 topics are there. First one is अनुच्छेद लेखन. Second one வந்து औपचारिक विषयों के आधार पर
patra lekan, okay, letter writing. And the next one is Suchna lekan, notice writing. And the fourth one is Vigyapan lekan, advertisement writing. Fifth one வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, இது எழுதலாம் இல்லனா இது எழுதலாம் சொல்லிட்டு. Fifth one first option வந்து short story writing, Lagu Katha lekan. And the next option is Aupacharik email, official email writing. Okay, any one you can select from this. Okay, so we will see the one by one. संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन. 3 topics will be given. From that, any one topic you can select and write. Anuched Lekhan is paragraph writing. So 3 topics will be given. Any one topic you can select which topic related things you know very well. You can select that and you can write it. Second one, अभिव्यक्ति के क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र. So here about 100 words, a formal letter you have to write. Okay, so 5 marks for this question also. Okay, so second one is व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 60 शब्दों में सूचना लेखन. Here विकल्प सहित, this is given in with the option this or that. So any one topic you can write, notice board writing. So that is any one topic you can select for this 4 mark. So fourth topic is विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन. For this 3 mark, then here also vikalpa sahit, that is this or that option will be there. You can select any one option. Okay, so around 40 words you have to use in that for this 3 marks. Okay, so fifth question is दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के आला साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन. So up to your creative writing thinking, based on your creative writing thinking, you have to write a Lagu Katha Lekhan. So you have to write a short story within 100 words. If you don't know this, if you are not comfortable with this, you have another option here in the fifth question, that is विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक email लेखन. If you are not comfortable with short story, you can go with the formal email writing. Okay, so for this 5 marks. So this is all your 80 marks question paper. இப்படிதான் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்க போகுது. ஸோ நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர் பேட்டர்ன். 10th எப்படி வந்து எந்த லெசன் எதுல இருந்து எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்க போறாங்க அப்படின்ற ப்ளூ பிரிண்ட் இது. ஸோ நல்லா படிங்க, ப்ரிப்பேர் வெல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் கிட்ஸ்.